चलिए, एक दो न्यूमेरिकल्स हम लोग भी करते हैं, उसके बाद वी आर गोइंग टू मूव ऑन। यस सर। नोट्स वगैरह आपके पास कंप्लीट है ना? अब आइए जरा। नोट्स नहीं होंगे तो फिर आपको डिफिकल्टी होगी फॉर्मूला वगैरह देखने में भी। हाँ सर, but Zishan sir's notes were not as organized as yours. I felt that. तो फिर नोट्स चाहिए आपको? And sir, I went through the playlist of 22 for 25 आपका class, and I हाँ हाँ। wrote down notes as well. तो नोट्स कंप्लीट है ना लेकिन आपके? हाँ यस सर। फॉर एग्जांपल अगर हम पूछें फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर के? के और टी हाफ में क्या रिलेशन है? के एंड टी हाफ, व्हाट इज द फॉर्मूला? इफ यू हैव बीन गिवन के, व्हाट विल बी द टी हाफ? और टी हाफ दिया तो के क्या होगा? क्या फॉर्मूला देखिए जरा नोटबुक में अपने, बताइए। Uh, K equals to 1 by T half log A 0 by 8. ना ना ना। और देखिए जरा। So this is 2.303 by T log. टी हाफ एंड के, टी हाफ, टी हाफ एंड के। So T half equals to 0.693 by K. या वेरी गुड, करेक्ट। आई थिंक ऐसे अगर आपने मेरे नोट्स देखे हैं तो उसमें एक पॉइंट ये भी होगा, लाइक नोट करके हम लिखाते हैं that if they have given k, then you already know t half. If they have given t half, then you already know, कुछ कहीं पे है लिखा हुआ? हाँ सर। What is the line? Can you read that? Uh, I didn't write बोलो that, बोलो। sir. अरे लिखना चाहिए ना, कैसे चलेगा काम ऐसे? हाँ, ऐसे हाँ। कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन to its 1/6 value। ये सवाल कर रहा था लास्ट क्लास में आप लोग को, तो समथिंग डिफरेंट है, यही सवाल कर रहा था। नहीं नहीं, कुछ और है, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन है, दिस इज फ्रॉम एनसीईआरटी बाय द वे। देखिए, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, यहाँ पे द रेट कांस्टेंट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर इज ऑफ रिएक्शन इज गिवन, तो एज सून एज दे गिव यू द रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, तो कहीं ना कहीं आप ना टी हाफ निकाल लिया कीजिए हमेशा, राइट? तो टी हाफ विल ऑलवेज बी यूज्ड, एंड इफ दे हैव गिवन टी हाफ, देन यू शुड ऑलवेज कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। तो के हैज बीन गिवन एज व्हाट? नहीं, के नहीं दिया हुआ है, आपको टी हाफ दिया हुआ है। T हाँ। नहीं नहीं नहीं, के दिया हुआ ना, रेट कांस्टेंट, हाँ ठीक है, रेट कांस्टेंट के इज इक्वल टू 60 सेकंड इनवर्स, T yeah. and we know that k, it is equal to 0.693 divided by t half. So t half will be equal to Uh, 0.693 divided by by 60, yeah. करेक्ट? ठीक है। Yes sir. अब किसी चीज को लाइक 0.693 अपॉन 60 ऐसे रहने की, डोंट नीड इट। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, नाउ यू रीड द क्वेश्चन, है ना? यू जस्ट ऑलवेज कैलकुलेट इट। ठीक है ऋषा? इफ द रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर इज गिवन, कैलकुलेट द टी हाफ। If the T half of a first order reaction is given, always calculate the rate constant। ठीक है? A दिया है, T half निकालिए, T half निकाले कि आपको उसके बाद देख सवाल क्या है। It doesn't matter what the question is, always calculate this। ठीक है? इससे क्या होगा ना, at least right now what will happen is that आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। सही है हाँ या ना बताएं? Yes sir. ठीक है, तो एटलीस्ट इट विल बी बेनिफिशियल ना, भले ही हमको इस्तेमाल ना करना पड़े। ठीक है, अब देखते सवाल।
हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिड्यूस इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट 16th वैल्यू। अब इसको भी करने के दो तरीके हैं। आई थिंक लास्ट क्लास में जो दिशांत सर ने भी आपको बताया होगा कि हम पूरे रिएक्शन को देख लेते हैं और फिर पूरे रिएक्शन को हम बांटते हैं इस तरह से दैट 50% होने में, दिस इज 50%, 50% मतलब रिएक्शन कितना हो चुका है, द रिएक्टेंट हैज बीन, हाफ ऑफ द रिएक्टेंट हैज बीन ओवर, है ना, आधा बचा है, आधा खत्म हो गया है टी हाफ में, है ना, Yes, sir. दिस इज टी 50%। अच्छा, और अगर हम जाएं आगे, अब टेक द हाफ ऑफ दिस आल्सो, देन आई विल बी एट व्हाट, 1/4 ऑफ द रिएक्टेंट इज लेफ्ट, हाँ ना, Yes, sir. ठीक है। यहाँ पे हम रिएक्टेंट लिख रहे हैं, रिएक्टेंट कितना बच रहा है, हाफ ऑफ द रिएक्टेंट रिमेनिंग, है ना, रिएक्टेंट रिमेनिंग, हाफ ऑफ द रिएक्टेंट रिमेनिंग, 1/4 इज रिमेनिंग। इसका भी अगर आधा कर दें हम, देन कितना रिमेनिंग हो One, जाएगा, 1/8, 1/8। इसका भी हाफ कर दें तो कितना हो जाएगा, 1/16. 1/16, ठीक है। अच्छा, दिस इज अ टी हाफ, दिस इज अनदर टी हाफ, दिस इज अनदर टी हाफ, दिस इज अनदर टी हाफ, है ना। तो ये आपके पास पहला टी हाफ, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ टी हाफ, 3 टाइम्स ऑफ टी हाफ एंड 4 टाइम्स ऑफ टी हाफ, ये सुनो, Yes, sir. है ना। सो द टाइम टेकन फॉर 1/16 विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स द टी हाफ, करेक्ट। Yes, sir. एंड व्हाट इज 4 into 0.693 Divided divided by by 60. 60, whatever the answer is, that will be the correct answer। अब इसको एक और तरीका जो करने का वो भी हम बता देते हैं। दिस इज लाइक फॉर श्योर यू हैव टू यूज, ऑलवेज यूज दिस मेथड, बिकॉज कम कैलकुलेशन एंड द कैलकुलेशन द लेसर विल बी द मिस्टेक, है ना। ये जरा कॉपी दिस डाउन, लेट मी नो वंस यू आर डन रिशिता, ठीक है। नो नीड, अभी Yes. कैलकुलेट मत कीजिए इसको, बाद में कैलकुलेट कर लीजिएगा वंस यू आर रिवाइजिंग। लेट मी नो वंस यू आर डन। Done, sir. ठीक है, अब दूसरा मेथड इसको क्या होगा करने का, देखिए। टी इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ, बताइए जरा ये सुनो, Yes, sir. ठीक है। अब इसमें ये बताइए हमको, व्हाट इज ए नॉट,
No, 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 no. What is A naught and what is A? A naught is the initial value, A is the final value. हाँ, रिमेनिंग वैल्यू है ना। तो 1/16 का क्या मतलब हुआ, आपके पास पहले 1 था, अब कितना बचा, घट घट के कम हो 1/16 बचा, सही है ना। Yes, हम sir. इसको इनिशियल ले लेते हैं, इसको फाइनल ले लेते हैं ना। 1 and 1/16 is remaining. So T is equal to 2.03 upon K. What is K? K is 60. 60. Make sense, yes or no? ठीक है। Yes, sir. लॉग ऑफ इनिशियल कितना था हमारे पास 1। 1. हाँ ठीक है, अभी कितना है हमारे पास 1/16, तो 16 will go above, right? Yes, sir. It will be 2.303 upon 60 into log of 16. Log of 16 I can write it as what? As 8 into 8। 2. नहीं, 4 का स्क्वायर करके ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा, Oh, yeah. 4 square. राइट। और इवन बेटर आई कैन डू 2 to the power 3, I guess, 4. right? 4 और 3, Yes. 2 cube 3 is ना। 8. हाँ हाँ हाँ, my bad, 2 cube is 8, 2 to the power 4. So it will be equal to 2.303 upon 3 into 4 4. into 0.3, Yeah. करेक्ट। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सेम यहाँ पे चीजें आएंगी, मेक सेंस। तो दोनों तरीके हैं, हाँ, sir. ठीक है। बस इसमें ये है कि इफ यू रिमेंबर द लॉजिक इफ यू रिमेंबर द लॉजिक, देन यू कैन अराइव एट दिस फॉर्म वेरी क्विकली। आपको ये 1/16 2 to the power 4 ये सब करना, आई मीन यू हैव टू राइट दिस डाउन। बट इफ यू कैन अराइव ना कि हाउ मेनी हाफ लाइफ विल रिक्वायर टू रीच, तो हाफ के लिए जैसे कितना रिक्वायर्ड होता है, हाफ के लिए रिक्वायर्ड होता है What, sir? सॉरी आई गॉट डिस्कनेक्टेड। ठीक है, कैन आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, sir. हेलो, हाँ ठीक है, मैं ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आल्सो फ्रॉम एनसीईआरटी। इसमें हम आपको बता दे रहे हैं डेटा, हम पूरा लाइक द क्वेश्चन इज बिट लॉन्ग, ठीक है। आई एम राइटिंग द क्वेश्चन नंबर सो दैट यू कैन राइट द क्वेश्चन नंबर इन योर notebook and rewrite the question also, na? Leave a lot of space, I would say, like 3 lines, 4 lines. So what happens in the question, they say that during a nuclear explosion, one of the products is 90 strontium. Strontium whose atomic weight is 90, and it has this particular strontium, it is radioactive and it has a T half. T half, that is half life of 28.1 years. Now, I remember you guys asking, sir, क्या यहाँ पे ये मैटर करेगा in the first class, right? The यूनिट ऑफ टाइम, विल इट मैटर मिनट इनवर्स या सेकंड इनवर्स, है ना, पूछ रहे थे ना शायद आप लोग। आप बोल रहे थे, कोई आप Uh, पूछ रहा था। yes, sir. हाँ, तो यहाँ पे कुछ नहीं मैटर करेगा, ईयर इनवर्स है, तो आप जो भी कुछ पूछेगा, if they ask time, then you will calculate it in years only, right? So the T half of this is 28 years, 28.1 years, and they say that 1 microgram of strontium, 1 microgram of strontium, it was absorbed in the bones of a newly born baby, है ना, a baby,
it absorbed 1 microgram of 90 strontium. Now, and it was absorbed by the bones. See, strontium and calcium, they belong to the same group. तो अगर इसमें ions बनते हैं तो 2 positive, इसके भी 2 positive. तो bone instead of absorbing calcium, they absorb strontium 2 positive. ठीक है. अब उसके बाद उन्होंने बोला भाई कि बोन ने तो एब्जॉर्ब कर लिया, but the half life is what 28.1 years. So radioactive substance is there. So radioactive substance will be getting decay होता रहेगा. Radioactive decay आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा है अभी तक? नहीं सर, नॉट येट। अभी नहीं, अभी नहीं पढ़ा आप लोगों ने, ठीक है. तो radioactive materials they give out radiations and they decay. देर उसका अमाउंट ना कम होते रहता है. Now they are asking 1 microgram of 90 strontium, it was absorbed by the newly born baby instead of calcium. How much of this 90 strontium will remain after 10 years and 60 years? उसके आगे पीछे चीजें हैं, बट you have to try to understand and get the data what is useful for you. ठीक है. So t half has been given. तो जैसे ही आपको t half मिलेगा आप क्या कीजिएगा बताइए, k निकालिएगा, है ना. यस सर। So k will be equal to 0.693 divided by 28.1. It will be year inverse now. The unit will be year inverse. अब इसके बाद सीधा आप लोग क्या निकालना है, we need to calculate the remaining concentration. So we will write down the first order kinetics. अच्छा, by the way एक पॉइंट लिख लीजिएगा यहाँ पे, radioactive decay follows first order kinetics. Follows first order kinetics. So, next is here A naught, it is equal to 1 microgram, and they are asking what is the value of remaining A. Now next thing is apply करते हैं Kt upon, this is another variation of the same formula ना, Kt upon 2.303 will be equal to log of A naught upon A. क्या ख्याल है, करेक्ट है सुनो? यस सर। अच्छा यहाँ सुनिएगा, सुनिएगा ध्यान सुनिएगा ना, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे. A naught and A are concentration, ठीक है. तो concentration can be written by number of moles, initial moles divided by volume, divided by number of final moles divided by volume. So volume and volume will be same because reaction तो उसी container में हो रहा है, तो volume is not going to change initially and finally. So volume will be same. Now number of initial mole will be equal to molar mass, sorry, given mass of the substance divided by its molar mass of the reactant itself. Remaining mass of the reactant will be W upon M. Here again, the initial mass and the final mass will be different, but the molar mass will be same, yes or no? Correct है? यस सर। So no matter it is 90 strontium या फिर कोई सा भी strontium हो जाए, कोई से भी start हो जाए. If I talk about log A naught upon A, then for A naught I can write 1 microgram और A को वैसे ही छोड़ सकते हैं हम. I can write masses ना? Can you see that? यस सर। Is equal to log of A naught will be 1 upon, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, प्लीज टेल मी. नो सर। नहीं, ठीक है. अब यहाँ पे आपके पास आएगा k is how much, 0.693. अच्छा, for 10 years I am calculating, ठीक है ना. After 10 years what will be there, दो निकालना ना हम लोग को, after 60 years and after 10 years. So for 10 years I am writing the time they have given us 10 years. 0.693 upon 28.1, this is the k into 2.303 will be equal to log 1 upon A. यहाँ तक ठीक है, बताइए हाँ है ना? यस सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, देख लीजिए एक बार, पक्का बताइए.
हाँ सर, फाइन। ठीक है, ध्यान सुनिए। 0.693 into 10 will be equal to 6.93, यस सर। and 2.303 approximately 3 will be equal to 6.93, yes or no? 2.3 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2.3 को 3 3 9 एंड 3 2 6, 6.9 के करीब आ गया। मेक सेंस? हाँ, यस सर। सही है। तो बेसिकली वी हैव नाउ 3 अपॉन 28.1, 3 अपॉन 28.1 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 अपॉन ए। अच्छा, 28.1 को हम क्या लिख सकते हैं बताइए जरा। 28 सर। 28.1 छोड़िए, 28 है ना, एंड 3 अपॉन 7 हो जाएगा, राइट? 7 3 से नहीं, नहीं नहीं नहीं, कितना, सर 3 से तो जाएगा नहीं है, 3 से नहीं जाएगा, सर, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ना। 9 से 9 इज 27। 9 is 27 though. या We have 27, and then we have what do we have after that? 30, 9.3। या 28.1, तो लेकिन 1 अपॉन डेसिमल फिर आ जाएगा, कोई फायदा है नहीं उसमें। इसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, अपनी कैलकुलेटर में, कैलकुलेटर। दिस इज कमिंग एज 0.106 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 अपॉन ए। 0.106 will be equal to minus log a. Are you aware of this particular formula? हाँ, you will be aware ना, मैथ्स है ना आपको तो यस सर। ये पता है आपको, है ना? तो log a will be equal to माइनस माइनस 0.1। 0.10, सही है ना? चलिए, यस सर। अच्छा, अब इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, a will be equal to 10 to the power minus 0.106, सही आया ना? सर 1 सेकेंड। Because log a, the base will be 10, 10 to the power minus 0.106 will be equal to a. यस सर। Make sense? ठीक है। यस सर, गॉट अब इट। इसको सॉल्व करने का तरीका जो है ना, दिस वन आई हैव टॉट इन लाइक द 11th स्टैंडर्ड, इक्विलिब्रियम वगैरह में हमने पढ़ाया था। सॉल्व करने का है कि आप इसको क्या कीजिए, आप इसको ऐसे लिखिए, 0.894 - 1, हाँ या ना? यस सर। पक्का? आई डोंट रिमेम्बर सर। ठीक है, यू डोंट रिमेम्बर, बट इस पे ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताइए। हाँ सर, लिख सकते। देखिए, देखिए देखिए देखिए, माइनस करके देखिए ना, सोचिए जरा, या टेक यस योर सर, यू टाइम, कैन। यू कैन राइट इट ना। ठीक है। या अच्छा, so we can also write it as approximately 10 to the power 0.9 into 10 to the power -1। यस सर। मेक सेंस? ये तो एक्सपोनेंट्स वाला पार्ट आ गया है ना। अच्छा, 10 टू हाँ दी यस। पावर 0.9 अगर हम बात करें तो log ऑफ 8 विल बी इक्वल टू 0.9, करेक्ट? यस सर। सो वी कैन से 10 टू दी पावर 0.9 विल बी इक्वल टू 8। यस सर। ऐसे ही तो होता है ना, जैसे log अगर आपके पास 100 है तो इट इज वैल्यू इज व्हाट, 2। व्हाट इज 2? बिकॉज 10 टू दी पावर 2 विल बी इक्वल टू 100। यस सर। 10 टू दी पावर 2 है ना। अब यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 10 टू दी पावर -1, ठीक है, एंड दिस विल बी इक्वल टू 0.8। यूनिट विल बी माइक्रोग्राम, बिकॉज ऑल दी कैलकुलेशन, सी ऊपर भी माइक्रोग्राम लिया था ना मैं, 1 माइक्रोग्राम, सो दिस विल बी आल्सो 1 माइक्रोग्राम, सॉरी नॉट 1 हाँ माइक्रोग्राम, 0.8 माइक्रोग्राम विल बी लेफ्ट। ठीक है, इसको प्लीज कॉपी कर लीजिए।
सर इसके बाद we have to calculate for 60 years. हाँ, तो घर में कर लीजिएगा 60 years के लिए, Yes sir, I'll do it. है ना। ये सब सवाल तो हम बोलेंगे ना, इन सब सवालों को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एक दो बार ये बोर्ड्स में आया हुआ भी है ना। तो क्या करेंगे ना, इसमें वैल्यू भी चेंज नहीं करते हैं, बिकॉज आई मीन आपको समझ में ही आ रहा होगा, कैलकुलेशन टफ है इसमें, राइट। तो व्हाट दे डू इज दैट दे डोंट इवन चेंज दी नंबर्स, जनरली नहीं करते हैं भाई, किसी साल कर दिया तो फिर नहीं पता, बट जनरली दे डोंट डू इट। आपका हाफ ईयरली हो गया रिश्ता? हाँ सर हो गया। कब हुआ? um it got over at 27 September sir. हाउ वाज इट, कैसा गया? It was a bit harder than I expected sir, but I got the results. It was good. हाउ मच डिड यू गेट? I think I got 64 out of 70. 64 out of 70, माशाल्लाह, दैट्स गुड। सो Thank you sir. लाइक हाउ डिड यू फील अबाउट द क्वेश्चंस, लाइक किस तरह के थे? Like you knew the answers type of questions, you have seen the questions already? हाँ sir, I've seen, but organic में I got confused with the reactions. Like I by hearted them. Hmm, मैं MOPs, method of preparations and stuff. I उसमें गलती हो गई. अरे ये आप मतलब स्टार्टिंग में ना कुछ तो हो गया ऑर्गेनिक के साथ आपका। आई थिंक आपने 11th में पूरा किया था ऑर्गेनिक, मेरे साथ किया था ना कि नहीं किया था? हाँ आपके आपके साथ ही क्या था? किया था ना आपने? Yes. 11th में कैसा था आपका ऑर्गेनिक? 11th, I think I've gotten better in organic. 11th से, हाँ, because 11th से तो 11th, बेहतर हो। हाँ हाँ, 11th से ही आपको शायद ऑर्गेनिक में थोड़ी थोड़ी दिक्कत होने लगी थी, राइट। यस, में जानते हैं क्या होता है कभी कभी ना, एक फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर एबसेंट इन द फर्स्ट डे ऑफ द क्लास, पहला लेक्चर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, and you're absent. Let's suppose, है ना, maybe, or not even first lecture, if you are if it is even in the middle and you're absent and it's an important topic, ठीक है, important in the sense yes, that एग्जाम वाला important नहीं, बट उसका एप्लीकेशन आगे जगह बहुत, वो टॉपिक अपने आप में इट्स वेरी सिंपल, देयर विल बी नो क्वेश्चन आस्क्ड ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक, बट दैट टॉपिक विल बी अप्लाइड ऑन द अदर टॉपिक्स। वो जब होता है ना, देन इट बिकम्स अ बिट, मतलब तभी आई थिंक दिक्कतें आती हैं जनरली बच्चों को। खैर, लेकिन यू yes, हैव टाइम, है ना। आई होप यू yes, कैन सी दैट even though I was absent for like complete 1 month, chemical science खत्म हो जाना चाहिए था अगर हम 8 classes भी पढ़ते ना। क्या, ठीक है, today and one more class, chemical science will be over. You can see that 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 chapters are over. 3 chapters are remaining, है ना। yes sir. ठीक है, 3 chapters are remaining, वो हो जाएगा। इसमें से एक चैप्टर बायोमोलिक्यूल से, जो भी छोटा चैप्टर है, ठीक है। यू विल गेट हाँ sir. plenty of time, इंशाल्लाह। चलिए, राइट, नेक्स्ट टॉपिक दिस, उसको लिखिएगा अलग से आप। रेट एक्सप्रेशन for reaction involving gases only। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए गैस, इट इज रिएक्टिंग टू मेक बी गैस प्लस सी गैस, एंड फॉर दिस you have to only study the first order kinetics, है ना। इसमें सिर्फ आपको फर्स्ट ऑर्डर ही पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग गैसेस ओनली में, ठीक है। तो इनिशियल लेंगे, देन यू आर गोइंग टू टेक चेंज, एंड देन यू आर गोइंग टू चेंज द इक्विलिब्रियम, है ना। ठीक है, आई थिंक ये आप पहले भी देख चुके होंगे। Initially, see, for reactions that involve only gas, we measure the pressure. So initially only A will be present. So initial pressure will be only because of A. These will not be present.
ये आपके पास जो B और C है ये प्रेजेंट नहीं होंगे. What will be the change? Some A will be reacted. We cannot know that change particularly because अगर आप सोचे इस तरीके से ना, like if there is a box and the reaction is happening, we cannot see the gases. So how do we determine the change? We can only see the overall change in the pressure, nothing else. अगर गैस है ना तो गैस वाला कुछ नहीं जान सकते. What is the volume? We can know the volume because the volume of the gas will be the volume of the container. They occupy the complete volume. But how much A is reacting, you cannot know that. You can only measure the pressure. ठीक है, तो कितना रिएक्ट कर रहा है, आई डोंट नो, तो माइनस एक्स. जितना भी x, like whatever A has reacted, that much B will be formed, that many moles, or that much pressure will be because of B, and that many moles of C will be formed. है ना. अच्छा, बाय द वे अगर हम बात करें PV is equal to nRT, ध्यान से देखिएगा रिश्ता, दिस इज इंपॉर्टेंट ना, ध्यान से देखिए जरा. तो P will be equal to nRT upon V. So when a reaction happens, we do a reaction at a constant temperature. हम like even though a reaction can happen and it can explode and do things like that, but what we provide is a constant temperature. So temperature is constant, R is a constant, and if we are doing a gaseous reaction, we will not do it in an open container, we will do in a closed container. So the volume is also fixed. So all of these things are fixed. Whatever increase in the number of moles will be there, it will be shown directly as the increase in the pressure. So we can do the reaction instead of number of moles, we can do this in pressure also. That is why we are only writing about pressure. But why do we do it in pressure is because we can measure the pressure easily. If there is a, मतलब pressure measure करना इतना आसान है that each and every smallest to smallest clinics in India, I don't know how much rural area it is, but it has a device to measure the blood pressure. हाँ याना बताइए. Yes, sir. So you can understand how cheap it is, right? How हाँ cheap sir. that device is to measure the pressure. और number of moles gas दिख नहीं रहा, number of moles कहाँ से निकालेंगे, fine. चलिए, अब यहाँ पे देखिए Pi minus x, यहाँ पे plus x, यहाँ पे plus x. This is at equilibrium. That means the complete reactions have happened. And I hope you remember that particular one-liner from the 11th standard equilibrium. What happens at equilibrium? Nothing happens at equilibrium. All the reactions have already happened. Do you remember that, Shita? Yes or no? Yes, sir. ठीक है. अब रिएक्शन सारे हो चुके हैं. And now initial pressure we measured. Once the reaction, see, we measured the initial pressure. Okay, pressure is increasing. So we are waiting. Okay, reaction is happening. That is why pressure is increasing. Pressure increase, then it decrease, or it increase. And whatever is happening, we are waiting. We are waiting. Then once a pressure came, and now the pressure is not changed. We waited 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4, 5, 6, 10 minutes, 30 minutes, 50 minutes. The pressure is not changing. So we said, okay, fine. That means equilibrium has been achieved. Nothing is happening. So now we can measure that particular, we can see the pressure, total pressure kitna hai. So the total pressure, whatever we measured, it will be equal to P initial minus x plus x, because only this, and this will be providing the pressure, yes or no? Yes, At sir. equilibrium. Minus x and plus x will cancel each other, and the P total will be equal to P initial plus x. अब यहाँ पे अगर मतलब इतनी खूबसूरत बात है ना, चाहिए हम बताएं आप. P initial I can measure, P total I can measure. If I can measure P initial and P total, I can calculate the x, even though I cannot measure how many moles of A has been reacted, but I can calculate it. बात समझ में आ रही है? Yes, sir. है ना. देखिए कितनी खूबसूरत सी बात है कि हमारे पास एक डिवाइस ऐसा है जो कि ये नहीं मेजर करता है कि, बट वी कैन कैलकुलेट. दिस इज द पावर ऑफ थ्योरी. आइस टेबल बना के हम ये बता पा रहे हैं कि नाइट्रोजन का कितना, N2O4 का कितना मोल्स टूटा. I mean, I cannot see the gases, but I can say with conformity कि इतना मोल्स टूटा. How? Initial, फाइनल करो और दोनों के क्या कर दी. X will be equal to how much of the A has reacted. X will be equal to P initial minus P total. सही लिख रहे हैं कि गलत लिख दिया? गलत लिख दिया, I guess. X will be equal to P total minus P initial. Total minus P initial. Yeah, P initial. ठीक है. चलिए, X इतना आ चुका है हमारे पास. अच्छा, अब यहाँ पे देखें अगर हम at equilibrium, whatever A has reacted, A has reacted, a small amount of A will be remaining. What is the small amount of A remaining? Pi minus X. Yes or no? Yes, sir. So I can say that partial pressure of A, it will be equal to P initial minus X. It will be equal to P initial minus X. What is X? P total minus P Minus initial. P initial. Yeah. It will be equal to P initial 2P. minus P total. 2P initial आ रहे हो बहुत सही. Yeah. सही है. हाँ, sir.
अब आप सोचिए, यू कैन नॉट सी द ए गैस N2O का एग्जांपल जनरली आता है, इसमें SOCl2 का आता है, डिफरेंट थिंग, यू कैन नॉट सी द गैस बट यू कैन से द अमाउंट ऑफ प्रेशर इट इज अप्लाइंग, इनिशियल और टोटल प्रेशर से। मतलब क्या ही बताया हम इसकी खूबसूरती के बारे में। नाउ आई कैन राइट द फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन इज Kp अपॉन 2.303 is equal to log of initial concentration divided by final concentration. And we have seen previously that the number of moles is only valid, volume तो आपका same ही रहता है, and number of moles we have seen here now, number of moles is directly proportional to pressure. Whatever increase or decrease in the number of moles we can see, it will be also corresponding to the increase or decrease in pressure. So we can write Kp upon 2.303 is equal to log, है ना, instead of concentration we can write number of moles, instead of number of moles for gaseous reaction we can write pressure. So initial pressure, what is initial pressure? Pi. What is Yes, the sir. final pressure of what? A की वजह से क्या pressure है? 2 pi minus P2. Does this make sense, yes or no? Yes, sir. हम ठीक पढ़ा रहे हैं? एक्सीडेंट के बाद ठीक पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं? किसके आर बारे में सर? हम एक्सीडेंट के बाद ठीक से पढ़ा रहे हैं या फिर कुछ चेंज आया है? You know, sir, you're teaching very nicely. नहीं तो हम वैसे ही पढ़ा रहे हैं, फिर कुछ चेंज आ गया है? No, sir, uh, कुछ change नहीं आया. कुछ नहीं है पक्का? ठीक है, बिकॉज आई गॉट पक्का. हर्ट इन माई हेड, ऐसे मेरे सर में लगा Oh, था। sir, are you दैट इज okay व्हाई now? I'm just Was it very हाँ, नहीं नहीं, आई serious? एम, आई मीन इट वाज सीरियस। I mean, the day of accident was quite serious. Oh, Hmm. Like, fine I now, mean sir. the, I'm fine now, but like, memory loss was an issue. I mean, I don't remember after the accident that day. Saturday, I got hurt. I mean, I fell down, and I don't remember. I remember the Saturday before accident. I don't remember the Saturday after. I mean, I remember glimpses like dream. How you remember dream? Like one particular scene of a dream. Then the next, then the next. So I remember it like that. But people were saying that even though I was like hurt very badly, I was not able to, like, people were telling me like, oh, आपके साथ ये हुआ है, तो आप गिर गए. And I was constantly asking the same thing. I was hurt in my eyebrows. I was constantly asking like, is my eye okay? I was not able to grasp the memory. Like, I was not able to form new memories on that day. But once I slept, after that it was okay. Okay, sir. So But how have, you fell down? I was riding a scooty. Oh, okay. I don't know what happened actually. Maybe like, I don't know why. What happened? That's pretty serious. Falling down a scooty. Yeah, Yeah. it was, but alhamdulillah, I was like, I'm fine now also. Like, I got recovered in approximately, I would say, like, in half a month. For 14 days, I was in complete rest. Like, I was not even taking offline the coaching. But after 14 days, I started going to take like doubt classes and all. Slowly, slowly. Gradually, I then joined after 3 weeks. Here, I took for 1 month. Oh, okay, sir. Hmm. It's no changes there. No changes I there. no, Acha. sir. Uh, like, they were telling me, like the colleagues here, that when I got hurt, I mean, I was completely in bandage. Like, my face was completely in bandage. They brought me to the, I mean, this is a residential coaching here. So they brought me back to the hostel and all. So I was like, give me paper. I was making periodic table constantly, always. Then the students came and I was asking them, like, pucho, kuch bhi puchna, kuch puch. I was just trying to see that. I don't remember all of these. These are the things that colleagues are telling me. कि केमिस्ट्री कुछ याद है कि नहीं याद है हमको.
I was hurt badly, but I was not in pan. I mean, I was not in like panic or something like that. I was okay. Yes, sir. You all must have been like a bit worried, na? कि अचानक. Yes, yes, sir. My mom informed me. She was also worried, and then after that, I think yeah. After that, I sent you that message, and my mom's like, check again if he's okay or not. Hmm. Then writing, let me know. Yes, sir. Done. Hmm. इसके ऊपर एक सवाल है ना, इसके ऊपर सवाल हम आपको बताते हैं. जस्ट अ सेकंड. ठीक है, हम बस आपको बता देंगे कि ये कैसे होगा. ठीक है. Like you have to identify the case and then you just need to, I mean, write the formula. So the following data were obtained during the first order thermal. See, first order बोल दिया इन्होंने सीधा ही, है ना? Thermal decomposition of SO2 Cl2 at constant volume. ठीक है. I hope you can see all of those things which we were assuming कि volume constant रहता है. First order का ही सवाल आएगा, है ना? So all of these things are already present in the, like, I mean, present in the uh, question itself. अब इसमें क्या करना है? अच्छा, सवाल तो हमने लिखा नहीं है. एक सेकंड. What is the question? Calculate the rate of reaction. Rate of reaction when total pressure is 0.65 atm. सवाल को जरा लिख लीजिए. Let me know once you're done writing. Done, sir. Done. ठीक. ठीक. तो यहाँ पे कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द टोटल प्रेशर दे आर सेइंग इट इज इक्वल टू 0.65 atm. ये दो आपके पास पॉइंट दिए गए हैं ना. एक इनिशियल और सेकंड वाले को ना फाइनल हम लोग यहाँ पे मान सकते हैं. यहाँ पे आपके पास मान लेते हैं इक्विलिब्रियम यहाँ पे आया 0.6 atm पे एंड टाइम इज 100. अब यहाँ पे क्या करना है आपको? इफ यू यूज दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला सीधा, आपके पास दोनों प्रेशर तो है, इनिशियल एंड फाइनल. तो के टी अपॉन 2.30, के टी अपॉन 2.303 will be equal to log of, you will have P initial upon 2 P initial minus P total. So from here, see, what are the things that we already have? We have the time that is equal to 100 seconds. 2.303 is a constant. Initial is given and the total is also given. So from here, we can calculate the K. Make sense? Yes, sir. है ना? हमारे पास K क्या जाएगा? 2.30
2.303 divided by 100 into log of initial is what? 0.5 upon 2 into P initial will be 1 minus 0.6, right? Yes, sir. देखिए जरा, ठीक है, लॉग पार्ट में यहीं पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं. लॉग पार्ट विल बी इक्वल टू 0.5 अपॉन 0.4 which will be equal to 5 upon 4. Log 5 is 0.7 and minus log 4 will be equal to how much? 0.6. करेक्ट. Yes, sir. तो सीधा हमारे पास log इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी? 0.1. मेक सेंस? हाँ सर. ठीक है. So k will be equal to 2.303. log completely वैल्यू हम लोग ने निकाल लिया है अपॉन 100 है into 0.1. मेक सेंस? Yes, sir. ठीक है. तो अब ये यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी? दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2.303 into 10 to the power minus 3. Correct? Second inverse because we have taken the time in seconds. बताइए, यहाँ तक ठीक है? Yes, sir. चलिए, तो आपके पास k आ चुका है एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सो आई कैन राइट दैट रेट विल बी इक्वल टू द k into the concentration of SO2 Cl2. करेक्ट? पावर 1 रहेगा. हाँ या ना? हाँ सर. ठीक है. अच्छा, नाउ this rate they are asking when pressure is total pressure they are asking, no? When P total it is equal to 0.65 atm. अच्छा, अभी इस प्रेशर पे आपके पास प्रेशर ऑफ SO2 Cl2 कितना होगा? द रिएक्टेंट. तो ध्यान से सुनिएगा जरा, ये फॉर्मूला है हमारे पास. Pa कितना होता है? 2pi माइनस Pt. है ना? Yes, sir. है ना? सो वी कैन राइट will be equal to 2 into P initial was how much? 0.5. P total at this point is equal to what? 0.65. So this will be 1 minus 0.65 which will be equal to what? Which will be equal to 0.35. Correct? Hmm. Yes, sir. So we can write rate will be equal to 2.3 into 10 to the power minus 3 k की value into the pressure, है ना? We can instead of concentration what we can use? Pressure, because number of moles and volume these are constant होंगे ना. तो 0.35 लिख सकते हैं यहाँ पे सीधा 0.35. ठीक है. So whatever this rate will be, it will be that. ठीक है. This is also a good question. इसको copy कर लीजिए. Let me know once you're done. Done क्या ऋषिका? Yes, sir. Done.
अरे लिख रहे हैं कि नहीं, आपकी स्क्रीनशॉट ले रहे हैं फिर से? नहीं सर, लिख रही हूँ। ओके गुड। राइट, नेक्स्ट pseudo फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस. ठीक है. ना व्हाट इज pseudo फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, नाम ही समझ में आ रहा है, pseudo का मतलब फॉल्स है ना. तो ऐसे रिएक्शन विच आर नॉट फर्स्ट ऑर्डर बट under certain condition they become first order. So please write the reactions which is not truly first order but under certain conditions becomes first order, becomes first order reaction is called pseudo first order reaction. ठीक है. अब एक बात बताइए, let's suppose we have a reaction in which we have reactant A and the second reactant is water. What did I say, Rishita? We have one reactant Reaction A and the A and the other reactant is water. water. Now water is very cheap. To increase the rate of reaction हमने water का अमाउंट बहुत बढ़ा दिया. We took it in excess. ठीक है ना, अब हमने उसको excess में ले दिया. Now we have to saying that we have reactant A and water is in excess. Now if the water is already in excess, if the water is already in excess, if we add more water, it will have no effect on the rate of reaction. Does it make sense? Yes sir. है ना, water आपको चाहिए था 5, है ना, you needed 5 moles, you have 1000 moles. 1001 कीजिए, 1005 कीजिए, 1010, that is not going to affect the rate of reaction. So it was essentially that particular reaction, it is second order reaction, like A and water, they react with each other to form the product. So it is essentially going to be second order reaction, but under certain condition, that is when one of the reactant is present in excess, it becomes first order. That means now the rate will only depend on the concentration of A, because water is already in excess. Water, if I again increase the volume of water, or the again increase the amount of water, that's not going to change or affect the rate any significantly. Okay, so please we can write one more point. The concentration of reactant present in excess, present in excess does not affect the rate of reaction, and hence it is not considered in rate equation. Explanation: if in bimolecular reaction one of the reactant is present, is present in excess, the reaction becomes first order.
Let me know once you're done. हो जाए तो बताइएगा जी। Done, sir. एग्जाम्पल लिखिएगा। Hydrolysis of ester. So this is one of the example that is present in your NCERT और इसी सवाल भी जनरली काफी बार आते हैं, है ना। एक स्पेसिफिक एग्जांपल की अगर बात की जाए तो एस्टर वी हैव, तो वी हैव डन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सो वी कैन राइट R डैश प्लस वाटर, तो वाटर को तो वाटर क्यों लिख रहे हैं, प्लस H2O. Now this H2O will be in excess, and what happens, this H2O will break the ester into carboxylic acid, that is RCOOH plus R dash OH, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। ये एस्टर है, दिस कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज अल्कोहल, ठीक है। सो R will be equal to K into the concentration of ester. Why? Because water is in excess. Make sense, yes or no? Yes, sir. ठीक है, चलिए उसी तरह से एक सवाल भी लिख लीजिए। A reaction A plus B gives product is found to be following the rate equation R is equal to K into the concentration of A into the concentration of B squared. Determine the rate equation if B is taken in excess. If B is taken in excess. ठीक है, तो इस पे जो हमने बात लिखी है ना यहाँ पे, if in bimolecular reaction if one of the reaction is present in excess then the reaction becomes first order, इसी को अप्लाई करना है ना। अच्छा, यहाँ पे उसके बाद हमने ये भी लिखा है कि concentration of reactant present in excess does not affect the rate and hence it is not considered in the rate equation. तो हमारे पास रेट इक्वेशन तो क्या है, देखिए दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जाम। सबसे पहली बात आप क्या लिखिएगा, ऐसे ही सवाल आएंगे तो द रिएक्टेंट present in excess is not considered in the rate expression, ठीक है। So rate, it is given that it is equal to K into the concentration of A into the concentration of B square. Now which of this is in excess, tell me, A or B? B. सवाल पढ़ के बताओ, B। तो B को हम लोग नहीं लेंगे and the rate will become K into the concentration of A to the power 1, और इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर will be 1। अभी कितना ऑर्डर हो चुका है, फर्स्ट ऑर्डर हो चुका है, and the rate expression has been changed from K A B square to K into the concentration of A only.
Let me know once you're done writing. Done, sir. Then चलिए इसी तरह के सवाल रहेंगे, आसान आसान सवाल रहता है बिल्कुल, है ना। 2 मार्क्स का सवाल, 1 मार्क्स का सवाल ऐसा रहता है, 2 मार्क्स का रहेगा, हमको लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप लिखिएगा कॉलिजन थ्योरी। थोड़े थोड़े टॉपिक्स हैं, और तो कॉलिजन थ्योरी का जो इफेक्ट है वो थोड़ा सा बड़ा है। कॉलिजन थ्योरी, है ना। पता नहीं सर डिस्कस क्या है कि नहीं, बट रिएक्शन तभी होंगे व्हेन द रिएक्शन मॉलिक्यूल्स विल कोलाइड विद ईच अदर। क्या ख्याल है ऋषिता, हाँ सर। है ना। इमेजिन कीजिए आपके पास एक एटम है ऐसा, बी का एटम है ऐसा, है ना, और ये आ रहा है ऐसे, देखिए, है ना, ये कोलाइड करने के लिए हम्म, ऐसे कोलाइड किया हल्का सा, और फिर इधर चला गया। ठीक है, दिस इज वन, पहला केस। यू सॉ हर्षिता, अब देखा ना पहला केस, ये हाँ। ऐसे धीरे 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 स्लोली 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 इट टच्ड इट एंड देन इट वेंट। ठीक है, यस सेकंड सर। केस, सेकंड केस देखिएगा, सेम केस देखिएगा, है ना। क्या लगता है किस वाले में रिएक्शन होगा, पहले वाले में दूसरे वाले में, दूसरे वाले में। है ना। तो हाँ वी सर। कैन कंप्लीटली से दैट कि a particular energy is also required, even though when the collision is happening not every collision will lead to reaction, make sense, यस सर। है ना। सारे collision में नहीं होगा। अच्छा, अब देखिए, अब थोड़ा सा और चीज देखते हैं, है ना। दैट इज थोड़ा बड़ा कर दिया हमने इसको। ठीक है, ध्यान से देखिए, लेट इज सपोज दिस इज द रिएक्टिव पार्ट ना। मान लेते हैं इसमें आपके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसी है कि यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव है। यहाँ पे क्या है, डेल्टा पॉजिटिव। अब ये वाला पर्टिकुलर दिस मॉलिक्यूल ये जितना इधर मार ले, if it is hitting in this side, if it is colliding on this side, it is not colliding on the reactive part. Make sense, Rishika? यस सर। है ना। The reaction will only happen if this, तो रोटेट कर देते हैं हम, है ना, and these two parts react, the reactive parts they collide with each other, है ना। हाँ अब ये collision होगा, correct. This collision will, collision तो पहले भी हो रहा था, but this collision will lead to the reaction for the formation of product, है ना, and the collision will be effective. Make sense? यस सर। So there are two things which are required. एक तो हमारे पास क्या है, we require that collision will be happening, but all collision will not be fruitful, and all collision will not giving me product. Only a small number of collisions will be effective, and they bring about the chemical reaction. Second point is that a minimum energy is required by the reactant molecule, है ना। थोड़ी सी एनर्जी रहनी चाहिए, स्पीड रहनी चाहिए, और ओरिएंटेशन भी सही रहना चाहिए। तो इन्हीं 3 पॉइंट को बस लिखते हैं, आप मेरे साथ साथ लिखते चलिएगा। हाँ, आई विल टाइप इट बिकॉज ज्यादा टाइम लगता है। देयर मस्ट बी, पहला पॉइंट है ना, देयर मस्ट बी collisions taking place between reactant molecule, but every reaction, every collision is not fruitful. No, that means they do not give, each and every collision will not give you product, not fruitful, and only a small number of collisions are effective and bring about the chemical reaction. Once. Next point, the minimum energy required by reactant molecule for effective collision is called threshold threshold energy. No. एक minimum energy चाहिए रहेगी, if the reactor molecules they are not having that much speed, then the reaction will not take place. Although if they have a lot of speed and if they are not oriented properly,
then also the reaction will not happen. That means there must be proper orientation between the reactant molecule for effective coalition. ठीक है, यहाँ पे एक बात हम लोग लिख सकते हैं कि कंक्लूजन कंक्लूजन इस बात का ये है that the necessary condition for effective coalition are: first point, proper orientation; second point, threshold energy. Make sense? Yes, sir. Copy this down. Let me know once you are done. लिखे होगा वैसे आपने काफी हद तक. हाँ सर, अभी मैं कंक्लूजन में. Sorry, I'm in conclusion right now, sir. you are in a confusion. Conclusion. अच्छा कंक्लूजन, अच्छा बोला कंफ्यूजन हो गया, क्या होगा. ओके ओके. Done, sir. चलो. So